Hello guys, a very good evening. Am I audible? Audio, video, is everything clear? Please let me know. Yes, okay, wonderful. So, welcome to the session. Okay, this is a new series, Formula Firestorm, where we are going to discuss the formulas of this subject, chemical reaction engineering. This is the part one, and this is going to be very helpful for your preparations of GATE 25 exam. Okay. And in this formula series, and this is going to be we will discuss basically we will do the formula revision as well as we will do some questions for practice purpose. Okay. So first, if you guys remember, we did a poll after that video where we exposed the GATE 25 trends. So in that poll, most of you suggested to start with CRE. So this is chemical reaction engineering. You know, we have seen that in the trends also. The weightage of this course, chemical reaction engineering, is about 10 to 13 marks. Okay. So what we are going to do, as I have already told you, we will do the formula revision plus if there will be anything special or any important derivation, so we will do those important derivations also for your better understanding. Not all, but important derivations if needed. Okay. And some practice questions. Okay. So you can think this series of Formula Firestorm as kind of a capsule course. Okay. So what we are going to discuss in this series for chemical reaction engineering,
We will do the discussion in several parts. 5 or 6 parts will be there, in which we will do, in first part, we will do the discussion about the introduction and mole balance and reaction kinetics in this part 1. Then in part 2, we will discuss about the design equation of ideal reactors and multiple reactors. Part 3 will be about the kinetics and designing of multiple reaction system. Part 4 will be on the non-isothermal reaction system and non-ideal reactors. And then part 5 will be on heterogeneous reaction system and enzyme reaction system. Every part we will do for a duration of 40 to 50 minutes. Means this is our target. Okay, we shall try to cover this in maximum 40-50 minutes. Okay. So the series, the timing of all these sessions will be same, 4 p.m. on our YouTube channel. Okay. So introduction. Let's start. So before we start our discussion, just wanted to know, are you guys ready? Tell me. मैं यहाँ मोबाइल में आपकी चैट ओपन कर लेता हूँ. यस. ओके, वंडरफुल. वॉइस, क्या वॉइस तो क्लियर है आई गेस. CRE2 ऑल्सो. अरे केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में ये सारे वो टॉपिक्स आते हैं ना. इफ यू गाइज आर देयर ऑन माय टेलीग्राम चैनल, तो और इफ यू हैव डन द CRE कोर्स, तो यू नो दैट आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू ऑल द टॉपिक वाइज PYQs. ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हमने PYQs प्रोवाइड किए थे. तो द प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हम करेंगे, सम क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम PYQs, some questions from the class, and some new questions we will do. Okay, so let's start as you guys are ready. Okay, so what is chemical reactions? आप बोलोगे सर इसमें क्या फॉर्मूला है? अरे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? यहीं से तो फॉर्मूला स्टार्ट होता है. केमिकल रिएक्शन इज, you know, any process in which chemical changes occurs that cause the chemical changes. And you know, here chemical changes means change in molecular structure. Correct? Chemical change means change in molecular structure. Okay. So you guys know that chemical reactions we can uh, write in the form of chemical equations. Any chemical reaction can be represented mathematically with the help of chemical reaction equation. In short, I am writing like this. I hope you will understand. And that is summation of nu I into AI is equal to 0, where nu I is stoichiometric coefficient of the component participating in the reaction. Species I participating in reaction.
And AI is any chemical substance, or you can say chemical species. So suppose if we have a chemical reaction in which four components are participating, let's say A, B, C, D, so we can write it as nu A of A plus nu B of B plus nu C of C plus nu D of D equal to 0 as per this equation method. And suppose if A and B are the reactants, A and B are the reactants, while C and D are the products. So chemical reaction is any process that cause chemical change. So the substances, the components which are getting consumed, which are participating in the reaction, and the amount is decreasing, they are called reactants. And the new substances getting formed, or the amount for which the amount is increasing, they are called products, the resultants. You know that. So for reactants, since their amount is decreasing during the reaction, that's why their stoichiometric coefficients will be negative. Okay. So like for component A and B, suppose they are the reactants, and their stoichiometric coefficient is suppose small a, and for B it is a small b. Since it is decreasing, so it will be minus a, and for B it is minus b. That's how we will write. And C and D are the products, their amount is increasing. So we will write their stoichiometric coefficients as plus C and plus D. So if you rearrange this, you can write the equation as AA plus BB equal to CC plus DD. करेक्ट? यही होगा, ऐसे ही लिखेंगे. ठीक है. Now you know that here chemical reaction has the direction. We know we are going from reactants to product side. So instead of equal to sign, we can represent usually by arrow. ठीक है. So arrows basically signifies that we are going from this side to that side, initial state to final state. Okay, that is the purpose. That is the whole idea. So this is how we write the chemical reactions. अब next point आता है, how can we find out when this reaction is going to complete? How can we design the chemical reactions? ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. When we talk about the chemical reactions, so chemical reactions takes place in chemical reactors. अब ये सब क्या होता है ये हम बात कर चुके हैं, तो इसलिए इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. और अदरवाइज बाद में जब हम रैंक इम्प्रूवमेंट सीरीज या कोई क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, क्विक रिवीजन क्लासेस, तो वहाँ पे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, मतलब एक ब्रीफ डिस्कशन वहाँ कर लेंगे इन क्विक रिवीजन क्लासेस, proper with theory, numericals, and everything. So chemical reactors, are the devices in which chemical reaction occurs, and the characteristics of reactors remains unchanged. Characteristics like chemical reactor characteristics, physical characteristics, and mechanical characteristics. You know that. ठीक है. मैं आपको एक फिर भी एक बेसिक आइडिया देता हूँ. सपोज जैसे ये बॉटल है, इसमें वाटर है, यू कैन सी, है ना. तो सपोज इफ आई ऐड कैल्शियम कार्बोनेट इन दिस, what will happen? Do you know when calcium carbonate will mix with water, it will form calcium hydroxide? That is one exothermic reaction. Heat will be produced, and that heat, what will do? Heat can melt down this bottle. तो क्या इस bottle में आप दोबारा reaction करा सकते हो? No, this is not chemical reactor. Although reaction is taking place. तो यहाँ पे हम chemical reactors की बात कर रहे हैं, where the characteristics of reactors remains unchanged. आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है. ठीक है. अब केमिकल रिएक्टर्स को जब हम डिजाइन करने की बात करते हैं, तो वहां पे हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं टू डिजाइन देम, डिजाइन द केमिकल रिएक्टर. वन इज काइनेटिक्स, सेकंड इज कॉन्टैक्टिंग पैटर्न, एंड थर्ड इज
परफॉर्मेंस इक्वेशन, है ना? तो यहाँ पे आप समझते हो काइनेटिक्स मीन्स हाउ फास्ट द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड दैट प्रोसेस, टेल मी, रिएक्शन इज फास्ट और स्लो, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई रिएक्शन इज फास्ट और स्लो? कैसे पता चलता है? हाउ वी डिटरमाइन दैट रिएक्शन इज फास्ट और स्लो? हाउ? This is what we check in kinetics. How we do that? Which parameter we use? It is reaction time. Okay. Reaction time help us to figure out the reaction is whether fast or slow. If reaction is fast, so you know reaction time will be less, or basically you can say that if reaction is taking place in less time, that is fast reaction. If taking place in more large time, that is slow reaction relatively. And this is a relative term, you know that. ठीक है. अब reaction time कैसे पता चलता है? तो reaction time we determine with the help of rate of reaction. करेक्ट? तो दिस इज आवर नेक्स्ट पार्ट, रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी बात करेंगे. कॉन्टैक्टिंग पैटर्न एंड परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या है ये हम आगे देखेंगे जब नीड हो. ओके. तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की. अगर इन केस एनी वन ऑफ यू हैव एनी कंफ्यूजन बाय चांस व्हाट इज रिएक्शन टाइम which is denoted by small t, so reaction time you can define as the time taken by the reaction to complete up to the desired extent. Okay, so up to the desired extent. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन की. तो यू गाइस नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन डिफाइन is denoted by small r, and it is usually proportional to, if I define rate of reaction, तो यहाँ पे clear होना चाहिए. Rate of reaction can be defined in two ways. ठीक है. One, by r, notation r, that is the proper rate of reaction, actual meaning of rate of reaction. But for calculation purpose and everything, we can also define the rate of reaction in terms of components participating in the reaction. ठीक है. उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम आज बात करेंगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ species I, can be denoted as Ri. And you guys know that this Ri is proportional to rate of change of moles of component I. So here we use the capital N symbol to represent reaction. अब ये रेट ऑफ रिएक्शन डीएनए ओवर डीटी है, ये क्या होता है इसकी बात भी करेंगे. तो डीएनए ओवर डीटी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोल्स ऑफ आई. और यू कैन से चेंज इन मोल्स ऑफ आई per unit time. Okay, and this rate of reaction for homogeneous reactions, you know that for homogeneous reaction system. What is homogeneous reaction system? You guys know that. ठीक है. अगर किसी को डाउट है तो please mention in the comment box in the live chat. I will explain to you. The rate of reaction for homogeneous reaction system can be defined as 1 upon V dNi over dt. And if you write the units, so you know SI units will be like mole per meter cube per second.
अब यहाँ पे मीनिंग समझते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का होता क्या है. ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी गिव यू दिस. Like if any one of you have any such doubt, what is a homogeneous reaction system? So you should know that, and I hope you already know reaction mixture. What is reaction mixture? First thing, what is mixture? So mixture is combination of two or more components or initially separated phases, all that stuff, you know that. Okay. So reaction mixture is, you can say, any mixture that is formed due to chemical reaction. Okay. And based on the phase of the mixture, you guys know, mixtures in general, we classified them as in two categories: homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures are those where mixtures exist in one phase, and heterogeneous mixtures are those where mixture exists in more than one phase, like water and sugar, one phase mixture, water and sand, two phase mixture, water and oil, two phase mixture. So you know that. Similarly, when reaction mixture exists in one phase or single phase, you can say, that is called homogeneous reaction system. तो अभी हम इसी की बात करेंगे, एंड दिस इज व्हाट बेसिकली यू कैन से योर CRE1. ठीक है, जो भी हमने अभी कंटेंट्स स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, लाइक हियर इफ यू सी all this part and this is the part of your CRE1, and only this part has a weightage of about 8 to 11 marks in your GATE exam. ठीक है, तो आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे. सो फॉर homogeneous reaction system, suppose there is a reaction, let's say A gives B, so you know that A is the reactant and B will be the product. So how will you write the rate of reaction? You guys know that for reactant A, as per the definition, rate of reaction can be written as 1 upon Ra is equal to 1 upon A dn 1 upon V dna over dt. Similarly, अगर आपको product के लिए लिखना है, for product B, you can write the rate of reaction as 1 upon V dnb over dt. Correct? This is how we will write as per the definition. But यहाँ पे एक twist है. What is the twist? Here, if you look, dnb, that is change in moles of B, means final moles of B minus initial moles of B. So you know this is going to be positive. dt is always positive, V is positive, so rate of reaction will always remain positive. But here, if you see this expression here, dna, which is final moles of A minus initial moles of A, it is going to be a negative value. And you know, rate of any process cannot be negative. Rate will always be a positive quantity. I hope you know that. Rate of any process is always positive. क्या कोई बता सकता है क्यों? अरे भाई, सिंपल सी बात है. अगर आप लॉजिक समझो, तो you are going in forward, any process you are doing to move in the forward direction, है ना? Any process you are doing to move in the forward direction, so final position is always going to be more than the initial position.
or the final values will always be more than the initial values. So what is change? Change is final minus initial, so has to be positive. So rate has to be positive always. है ना? I hope you understand this. तो यहाँ पे DNA negative है. So that's why to compensate this negative value of DNA, what we will do, we will put one minus sign here. अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो आर बी इक्वल टू ये है, आर ए इक्वल टू ये है. अब कुछ देर इज समथिंग डिफरेंट, यू कैन सी here everything is positive on right side as well as left side, but here on left side we have minus sign. So that's why to just differentiate the things here with RA also we put one minus sign notation. So this is how we write the rate of reaction for reactants, and this is how we write the rate of reaction for products in homogeneous reaction system. I hope you guys already know these things. ठीक है, इसमें कुछ मैंने नया नहीं बताया है. This is very common. But still any one of you if have any doubt you can discuss. ठीक है, तो ये हमारा वो rate of reaction हो गया. अब इसमें concept आगे आता है. Sir, please explain negative again. ITV. ITV means, sorry, the तबला freak. ITV मैं समझा नहीं. ITV मतलब आप नेगेटिव साइन की बात कर रहे हो या क्या? What you are trying to ask? ITV means नेगेटिव साइन. हाँ, मैंने सही सोचा. देखो, rate of reaction as per the definition, you know, this is the rate of reaction for homogeneous reaction system for any species I, dni over dt divided by v. So for product B, by definition we will write like this. For reactant A, by definition we will write like this. Okay, but you know, rate is always going to be a positive quantity. I hope you understand that. So here DNA is a negative value. That's why to compensate this negative value of DNA, which will always be negative, you know that, because A is going to decrease. That is the reactant. है ना? लिखा भी है reactant. So that's why to compensate this negative value of DNA, we put minus sign here. Okay. So अब आपका जो rate है, if you see the value on right hand side, it will always be positive because minus minus will become plus. बट अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए, यहाँ राइट साइड में सब कुछ पॉजिटिव है, यहाँ राइट साइड में माइनस साइन है, तो लेफ्ट साइड में भी डिफरेंस होना चाहिए. अदरवाइज हाउ विल यू फिगर आउट कि व्हाट इज द मीनिंग, है ना? तो दैट्स व्हाई हियर वी यूज माइनस एज अ नोटेशन आल्सो. अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, तो ये भी मैं बता देता हूँ. देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वी डी एन ए बाई डी टी, है ना? तो हियर दिस माइनस इज जस्ट अ नोटेशन, nothing else. And what is the meaning of this notation? This notation means it is the rate of reaction in terms of disappearance of A. And this minus sign here is a mathematical sign, mathematical negative sign. ठीक है, इससे क्या मतलब समझ सकते हैं? देखो, ऐसे आप ऐसे भी समझ सकते हो. सपोज कहीं पे अगर आपको कोई इक्वेशन दी है z प्लस माइनस आर ए, तो आप उसे z माइनस आर ए नहीं लिख सकते. यू कांट राइट लाइक दिस बिकॉज इट इज जस्ट अ नोटेशन. बट अगर इक्वेशन आपको दी है सपोज ऐसा कुछ z प्लस माइनस वन अपॉन वी डी एन ए बाई डी टी, तो उसे आप लिख सकते हो z माइनस वन अपॉन वी डी एन ए बाई डी टी, बिकॉज इट इज अ मैथमेटिकल नेगेटिव साइन. आई होप नाउ इट इज क्लियर. ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी आर बी की, विच वाज वन अपॉन वी डी एन बी ओवर डी टी, तो हेयर इट इज पॉजिटिव आर बी, तो इट मीन्स rate of reaction in terms of formation of B. Okay, so that's why we put this negative sign here also on left hand side. So I hope now the meaning is clear.
ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको सपोज एग्जाम्पल में दिया होता है आर सी इज इक्वल टू समथिंग 7 मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसका क्या मतलब निकालोगे? इट मीन्स यू विल से that component C is getting formed with a rate of 7 moles per meter cube per second. Correct? And similarly, मैं बोल लिख भी देता हूँ, component C is getting formed at a rate of 7 moles per meter cube per second. This is the meaning. ठीक है, मे बी आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे होगे, मैं खुद को थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। तो ऐसे ही अगर सपोज अगर कहीं पे दिया हो माइनस आर पी इक्वल टू 8 9 मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसका क्या मतलब होगा? What will be the meaning? The meaning is component P is getting disappeared or consumed at a rate of 9 mole per meter cube per second. Clear? I hope this is clear to everyone. अब यहाँ पे बात आती है composite rates of reaction, also known as relative rates of reaction. So suppose we have a chemical reaction AA plus BB gives CC plus DD. So we have seen this in course as well, and we will look at this in the quick revision sessions also whenever they will be started. So ABCD. So ABCD क्या है? Here that relative rates की अगर हम बात करें तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आर ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस आर बी अपॉन बी इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी small c is equal to RD upon small d. These are the relative rates of reaction. Okay, so I hope it is clear, guys. आवाज लो आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट बड़ी थोड़ा ईयरफोन वगैरह लगा के देखो या किसी साइलेंट प्लेस पर, क्योंकि बाकी सबको तो सही आ रही है। पढ़ने में स्लो हूं मैं। ओ, ओके बड़ी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब फास्ट हो जाते हैं प्रैक्टिस से एंड करेक्ट मेंटरशिप से। तो आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो अब इसका यू मतलब क्या है ये समझते हैं। अब आपको एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है। इफ आई टेल यू that minus RA, minus RB, RC और RD, these are not the rate of reactions. ये इन्हें हम rate of reaction बोल, actual में these are not the rate of reaction. We always write rate of reaction minus RA, rate of reaction RC, minus RB like this. But these are not actual rate of reactions. Actual rate of reaction होता है R, which is equal to these. ठीक है। अब जिन लोगों ने क्लासेस किए उन्हें पता होगा इसका क्या मीनिंग है, या जिन लोगों ने पढ़ा है पहले, बट द पीपल हु आर डूइंग द थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे भी आई बिलीव आप में से कुछ लोग होंगे, तो आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है। इसका क्या मतलब है देखो समझते। सपोज इफ आई कंसिडर वन एग्जाम्पल,
let's say this ammonia synthesis. Okay. And here, let's say the rate of reaction is at any point, at any moment, or at any time t, if you observe, and the rate of reaction for nitrogen is, let's say, 7 mole per second. Or you can say the molar rate of disappearance of nitrogen. Molar rate of disappearance of nitrogen. अगर आप लोगों ने मोल बैलेंस पढ़ा है, तो you know that mole balance was accumulation equal to inlet plus minus outlet plus generation minus disappearance. So disappearance means nitrogen is getting disappeared with a rate of 7 mole per second. And thus hydrogen will react at a rate of 21 moles per second. And therefore ammonia will form at a rate of 14 moles per second. Okay. तो इसका क्या मीनिंग है? What is the meaning? Nitrogen is getting in 1 second 7 mole nitrogen is disappearing, in 1 second 21 moles of hydrogen disappearing, and in 1 second 14 moles of ammonia is forming. Oh, and all these are the gases, you know that. So it is a homogeneous reaction system, single phase reaction system. So the volume of the reaction mixture, suppose if I divide and all these things by the volume, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा, suppose volume is V. Let volume of mixture, reaction mixture is V. तो ये हो जाएगा 7/V मोल पर सेकेंड, 21/V मोल पर सेकेंड, and 14/V मोल पर सेकेंड. नाउ द यूनिट्स विल चेंज ऑल्सो, क्योंकि V है तो आपने सपोज V मीटर क्यूब लिया है, तो इट विल बी 7/V मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, 21/V मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, 14/V मोल पर मीटर क्यूब पर सेकेंड. Correct? Now, what is this value? If you look, this is nothing but minus Rn2. This is nothing but, या फिर मैं अलग से भी लिख देता हूँ. Here, you know, minus Rn2 will be 7/V mole per meter cube per second. Minus RH2 will be 21/V mole per meter cube per second. And RNH3 will be 14/V mole per meter cube per second. Correct? Are these values equal? नहीं है ना. अब इसे आप ऐसे सोचो, all of us are sitting in a bus or a train or a car or a spaceship, whatever it is, sitting, and that bus, that vehicle is moving at a speed of, let's say, 100 miles per hour. Okay? Now there is one person which is who is stationary at some place observing us. So if anyone will ask him, the observer, bro, what is the speed of Ankush going in that vehicle? So you know, same as the speed of vehicle, he will say 100 miles per hour. If they ask what will be the speed of this Shivadatta, then observer will say same as vehicle, 100 miles per hour. If he say Kirtika, the table tabla freak, Anudarshan, Aditya, anyone, so he will say for each and every one of you that the speed is same as vehicle, 100 miles per hour. I hope you are understanding the context. अब यहाँ reaction में आते हैं. All these components are participating in same reaction, in one reaction. Nitrogen, hydrogen, ammonia, these are the part of this one reaction only. है ना? So if I ask, what is the speed of reaction? Whatever it is, let's say the speed of reaction is V. Suppose
Speed of reaction. Speed of reaction is v. तो उससे क्या होगा? That means if anyone will ask that observer, what is the speed of nitrogen? He will say same as the vehicle, means reaction, v. What is the speed of ammonia? Same as the speed of vehicle, that is v. Are you understanding this, you people? Hello? Tell me. This is very important stuff. ठीक है? See, कोई सा भी revision हो, formula revision, crash course, quick revision, full course, whatever. CRE is all about the reaction kinetics. If you know how to write the rate expressions, you are good to go, because after that only mathematics is there. So that's why in formula revision also I am focusing on this part. Okay, so please let me know. Mention this. Are you understanding this? That the speed of each and every component has to be same as the speed of vehicle, means speed of reaction. Yes. So many people are there, but टाइप नहीं कर रहे हैं. अगर टाइप नहीं करता कोई बात नहीं, इमोजीज भी भेज सकते हैं, इसमें तो ऑप्शन भी आता है लाइव चैट में, है ना? तो स्पीड ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, दिस इज द ऑल्टरनेटिव नेम और यू कैन से निक नेम. Rate of reaction is also known as speed of reaction, and speed of reaction is generally denoted by the symbol small v and rate of reaction by small r. तो इन सभी कंपोनेंट्स का भी रेट ऑफ रिएक्शन सेम होना चाहिए ना, एज पर द लॉजिक. बट क्या यहाँ सेम है? नहीं है. तो फिर हम क्या करेंगे इसे सेम बनाने के लिए? See, if I divide all these values, whatever we got, with their stoichiometric coefficients, then सब सेम हो गए. So I hope now you have understood. Minus RA upon A minus RB upon B, RC upon C, RD upon D equal to R. R is the rate of reaction. Okay. और ये minus RA minus RB RC RD, these are not the rate of reaction in actual meaning, in true sense, in literal meaning. लिखा है ना, literary review. In literal meaning, they are not the rate of reaction. तो ये है क्या? इन्हें क्या बोलेंगे? What we will say. So actual meaning is, see, if I am writing minus RA or minus RB, so you can relate for both. Minus RA की बात कर रहा हूँ. तो actual meaning of minus RA will be molar rate of disappearance of A per unit volume. Volume of reaction mixture. Okay. And similarly, if anyone asks you what is RC, so you will, or RD, whatever, so you will say RC means molar rate of formation, or you can say generation or production or manufacturing, whatever you like. You say formation of C per unit volume. Okay. And this molar rates per unit volume, molar rate of disappearance and molar rate of formation per unit volume are called rate of reaction. इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. R is nothing but actually the Ri upon mode of Newton. ठीक है. Ri is molar rate of disappearance or formation of component I, or you can simply say molar rate of change of component I per unit volume divided by stoichiometric coefficient. ठीक है. अब यहाँ मोड लगाया है क्योंकि अगर रिएक्टेंट है नेगेटिव नहीं करेंगे, से हम बस मैग्नीट्यूड लेते हैं. आई होप इट इज क्लियर नाउ. This is the actual meaning of rate of reaction, and this is the concept of relative rates. अब इसका benefit क्या है? In any chemical reaction, in exam, in any problem, if they give you, if they provide you the data for rate of reaction or the molar rate of disappearance or consumption or generation of any component, so you can calculate the data for rate of reaction as well as for other components.
ठीक है, अब इस पे हमारा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो सी फर्स्ट प्रॉब्लम। इन अमोनिया सिंथेसिस, nitrogen is disappearing at a rate of 210 gram per second. Find out the rate of formation of ammonia in same units. ठीक है, तो let's try. तो अमोनिया सिंथेसिस है, तो ammonia synthesis we can write as this. So here the relative rates of reactions will be minus Rn2 upon 1 equal to minus RH2 upon 3 is equal to RNH3 upon 2. तो here for nitrogen data is given. अब आप में से कुछ लोग क्या करेंगे जल्दबाजी में, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे और कह देंगे जी 200 ग्राम पर सेकेंड, और फिर मैं बोलूंगा जी बिल्कुल गलत। Why? Because these are the molar units. These values, these expressions are in molar units and data is given in mass units. So first you need to change the data. Okay. So this is given in mass units, 100 gram per second. उससे पहले molar units में convert करो. So you know that for nitrogen, what is the molecular weight? 28 gram by gram mole. So you will get the rate of formation of ammonia equal to 200 upon 28. What is the value? Sorry, 210 था ना ये, sorry, 210, my mistake. It will be 430, 15 mole per second. Is it correct? And they are asking in gram per seconds. So if they ask in mole per second, so this will be the answer. But if they ask you in gram per second, so the molecular weight of ammonia is 17 gram by gram mole. So it will be 150, 105, 255 gram per second. Correct. Simple. Okay, so that's how you can do it.
Simple. That's type of question they can ask you in 1 mark or for MCQs or in MSQs. आगे बढ़ते हैं. Now, the mole balance over chemical reaction. Suppose we have a chemical reaction A plus BB gives CC plus DD. Before we talk about the mole balance here, so here you should understand few terms like conversion, which is generally denoted by capital X. Okay. So if I talk about the conversion of component A, so it can be defined as, you know, that amount of A reacted to the amount of A fed or supplied to the system, to the reactor. ठीक है. अब मैंने amount क्यों लिखा है? Because it could be in mass, it could be in moles, doesn't matter. Because it is a ratio, so it will be same. For mass units, molar units, conversion will remain same. ठीक है. तो अगर ऐसे हम molar units में लिखें, in molar units, if you write, so you can see that XA will become moles of A reacted to the moles of A fed. One thing. Otherwise, from mole balance, you also know that moles of A reacted can be written as moles of A fed minus moles of A remaining divided by moles of A fed. तो इसका आपका इक्वेशन कुछ ऐसा भी आ सकता है, Na0 minus Na upon Na0, which you can also write it as 1 minus Na upon Na0. This is the conversion. And you can see here the maximum possible value of conversion or will be 1. Okay. So in general, you can always say XA is always less than equal to 1 and more than equal to 0. Always. I hope it is clear. Okay. तो यहाँ पे आते हैं. तो यहाँ पे अगर आपको A के लिए लिखना है, see everything if you have to do in terms of XA, so you can write moles of A remaining Na is equal to Na0 1 minus XA. If you guys remember, these were the mole balance equation. इनका हम derivation यहाँ नहीं कर रहे, उसका कोई ऐसा मतलब नहीं है. For B, you can write them as NB0 minus B upon A times of Na0 into XA. Similarly, moles of C formed or leaving the reactor can be written as NC0 plus C upon A times of Na0 into XA. And for D, you can write ND as ND0 plus D upon A times of Na0 into XA. अगर किसी को याद करना तो इन्हें याद करना भी बहुत ईजी है. वैसे तो आप इन्हें ड्राइव कर सकते हो इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इन मैक्सिमम 1 मिनट, बट मतलब एक कंपोनेंट के लिए कुछ कपल ऑफ सेकंड्स में एंड ऑल फॉर ऑल द कंपोनेंट्स इन मैक्सिमम 1 मिनट यू कैन राइट. ठीक है. बट स्टिल इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू मेमोराइज, सी Na0 XA है, B upon A, C upon A, D upon A, ये सब आप कर लोगे. If reactants are there, तो minus sign will become, and if products are there, because see, for A, you can also write it as on the same concept, Na0 minus A upon A into Na0 XA, based on same logic, if you want to write. ठीक है. तो ऐसे याद करना इजी हो जाएगा आपके लिए. For reactants minus, for products plus. Simple. अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए A और B, since you can see both are the reactants, so what will be the relation in their conversion? That also you guys know that moles of B reacted
यहाँ पे ये मोल बैलेंस से आपको याद रखना होगा, एक रिलेशन आता है, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड is equal to B upon A times of moles of A reacted. ठीक है, just remember this. So what is moles reacted? You can see here, moles of A reacted will be fed into XA. So on the same logic, moles of B reacted will be fed NB naught into reacted conversion XB equal to B upon A times of moles of A reacted, that is Na naught into XA. I hope it is clear. है ना? So these are the mole balance equations for chemical reactions. If any one of you have any doubt in these equations, how we got that and what, so you can ask. Otherwise, wait for the quick revision sessions, which we will start later on. Maybe next month or next to next month. Clear? I hope all these things are clear now to everyone. ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है. I am giving you the question. You can try, and if you find any difficulty, we will discuss in the next class. A feed mixture containing 100 moles of A, 200 moles of B, 150 moles of C, and 50 moles of R undergoes the following reaction. ये हमारी second problem हो गई. Following reaction is 2A plus 3B gives 4C plus D. Calculate the molar composition of reaction mixture after 40% conversion of A. Okay, and also calculate XP. ठीक है, अगर थोड़ा ट्रिकी बनाना होगा वो आपसे कह देंगे इंटरव्यू में, इस तरह का क्वेश्चन देंगे और पूछेंगे. ऑल्सो फाइंड आउट द कन्वर्जन ऑफ सी एंड डी एज वेल. अब जो लोग उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं है, कहीं और घूम रहे हैं, फिजिकली वहाँ हैं बट मेंटली कहीं और हैं, तो वो लोग खोजते रहेंगे एक्स सी एंड एक्स डी की वैल्यू और कुछ ना कुछ निकाल के दे भी देंगे. बट जिन लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस मोमेंट पर, लाइक यू पीपल, ओके, तो what you guys will say, क्योंकि you are preparing, you are here, so I can feel, I can say that maybe you are sincere. ठीक है, that's why you are here. बट इसका मतलब ये नहीं है जो लोग नहीं है वो सिंसियर नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू आर हेयर, so you are sincere among the sincere people. तो आप लोगों को पता है XC and XD cannot be defined because conversion can be defined only for reactants, not for the products. समझ रहे हो ना विनोद? अगर निकाल दिया बाई चांस किसी ने XC या XD फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो वहीं पे टाटा बाय बाय, खत्म, गया, गुड बाय. सो विद दिस वी विल रैप अप टुडे सेशन. टाइम हो गया आज का. ठीक है,
तो बाकी जो अभी हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स बचा है वो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इट इज नॉट फिक्स कि हम 5 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे सीरीज, बट वी विल ट्राई टू कवर अप एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 या 7 लगेंगे, बट मैंने आपको फिर भी 5 या 6 बोला था। देख लेते हैं। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बट स्टिल इफ एनी वन ऑफ यू फील एनी डाउट, इफ यू हैव एनी सजेशन और फीडबैक, तो यू कैन डिस्कस और मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये सीरीज मतलब सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, या फिर इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लाइक थ्योरी थोड़ा सा ऐड कर दूं, और या फिर आपको मैं एग्जांपल्स भी दूं, और अदरवाइज जस्ट सिर्फ इक्वेशन और क्वेश्चन करें और कोई डिस्कशन ना करें, कुछ भी अगर ऐसा आपको फील होता है तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल फॉलो, बिकॉज दीज सेशंस आर फॉर यू नॉट फॉर मी। ठीक है, तो जैसा आपको चाहिए उसी फॉर्म में हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। And for this sessions, if you guys need the PDF of these sessions, so you can subscribe to my Telegram channel। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट इज t.me/gatewiths। ठीक है, तो वहां पे आप सब्सक्रिप्शन चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन कह रहा हूँ, चैनल को फॉलो कर सकते हो। फ्यूचर में जो भी हमारी वीडियोस आएंगी या फिर जो भी कोर्स हम स्टार्ट करेंगे वो सब चीजें हम वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे हेड, sayonara।